हेलो एवरीवन वेलकम टू एसपी एजुकेशन पिला माने एही चैनल माध्यम रे तुमे माने गणित इंग्राजी विज्ञान साहित्य ग्रामर समस्त विषय आलोचना सह प्रश्नर उत्तर पाई परिबो। जो पिला माने नुआ करी चैनल टी को व्यू करिछो प्रथमे लाइक आउ सब्सक्राइब करनियो ता सहित बेल आइकन टी को प्रेस कर दियो जहा फल रे वीडियो अपलोड रे प्रथमे नोटिफिकेशन तो मन बाकू जीवो तो मन से वीडियो टी पाई परिबो। पिला माने आमे पूर्व क्लास रे तुम अष्टम श्रेणी न्यू इंग्लिश बुक जास्मिन यार यूनिट 2 रे थिबा ए टेल ऑफ वैल्यूर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम विषय कंप्लीट डिस्कशन करथिले। आज आम यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलो देखिबा एक नंबर प्रश्न कोन रहिछि। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट हैव बीन मार्क्ड फॉर यू। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। घटना गुडी को समय हिसाब रे हमें सजेई के लिखिबा। प्रथम और शेष घटनाटी सजेई के रखा जाइछि। अन्य बाकी गुडी को हमें समय क्रम रे सजाई लिखिबा। प्रथम वाक्य कौन रही मेजर सोमनाथ शर्मा वाज बोर्न इन 1923 इन कंगड़ा हिमाचल प्रदेश। मेजर सोमनाथ शर्मा 1923 मसीह हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ठारे जन्मग्रहण करथिले। द्वितीय वाक्य कौन रही इवेन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को हराइबा परे मध्य सैनिक माने भारत पई श्रीनगर को रक्षा करिया को वीरत्वर सह लड़ीथिले। तापर वाक्य रही द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर। मेजर सोमनाथ शर्मा को नेतृत्व में डी कंपनी को विमान जोगे श्रीनगर निया जाइतिला। तापर वाक्य रही मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिटरी कॉलेज सनहर्स्ट। मेजर सोमनाथ शर्मा सनहर्स्ट ठारे थिबा रॉयल मिलिटरी कॉलेज रे प्रशिक्षण नैथिले। मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक टू कॉम्बैट द एनिमी एट बडगाम। मेजर सोमनाथ शर्मा बडगाम रे शत्रु मान को मुकाबला करिया पई एयर स्ट्राइक पई अनुरोध करथिले। तापर बाकी रही मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमिशन इनटू 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। मेजर सोमनाथ शर्मा 1942 मसीह 19तम हैदराबाद रेजिमेंट रे नियुक्त होइथिले। मेजर सोमनाथ शर्मा was killed immediately after a mortar shell hit him। एक मोटार सेल बाजिबारु मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद होइथिले। तापर बाकी रही मेजर सोमनाथ शर्मा was the first recipient of the परम वीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा परम वीर चक्र प्रथम विजेता थिले। तो आम ये वाक्य गुडी को क्रम अनुसार लिखिले एबरी लिखिबा। प्रथम वाक्य तो हमारा ठीक अच्छी। तापर लिखिबा हमें 4 नंबर वाक्य मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिटरी कॉलेज सनहर्स्ट। याको हमें 2 नंबर रखिबा। तापर वाक्य रखिबा हमें मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमिशन इनटू द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। याको हमें 3 नंबर रखिबा। तापर रखिबा हमें 4 नंबर रे द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर। वाक्यटी हम 4 नंबर रखिबा। 5 नंबर रखिबा मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक टू कॉम्बैट द एनिमी एट बडगाम। तापर 6 नंबर रखिए हमें मेजर सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए मोटर सेल हिट हिम। तो 7 नंबर रखिए हमें इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। 8 वाक्य तो ठीक अच्छे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आम ये लिखिपर। प्रथम सेंटेंस 1 तापर 4 तापर 6 तापर 3 तापर 5 तापर 7 तापर 2 तापर 8 ये आम लिखा।
तापर प्रश्न रही रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. शत्रुको तुलनारे संख्यारे कम थाई एवं भयंकर गोलीमाड़र सम्मुखीन होई मध्य मेजर सोमनाथ शर्मा एवं तांकर सैनिक माने दृढ़तार सह अटल रहिथिले। द एयर वाज थिक विथ द साउंड ऑफ गनफायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल, बट मेजर सोमनाथ शर्मा's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। Despite heavy casualty and his own injury, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. बहु संख्यार सैनिक मृतहत हेबा एवं निजे आहत होइथिबा सत्त्वे मेजर सोमनाथ शर्मा अतुलनीय वीरत्व प्रदर्शन करथिले। He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. मेसिन गन चालक मान मैगजिन भर्ती करने को, आक्रमण दिग निर्देश करने को एवं पछघुंचा न दे निज स्थान में दृढ़ रहा निज सैनिक मान उत्साहित करने को से निर्भय रणक्षेत्र में घूरी बुलुथिले। तो प्रश्न कौन रही, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विथ गन फायर। वायुमंडल बंधुक गुलिर शब्द रे पूर्ण थिला। एही धाड़ी सेठाकार परिस्थिति विषय तुम कौन अनुमान कर पारुछ। उत्तर ऑप्शन रही द गन शॉट्स हैड स्टॉप्ड फॉर ए व्हाइल, किछि समय पई गोलीमाड़ बंद जाइथिला ना। देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में तीव्र लड़ाई चलथिला ना। द इन्वेडर्स वी आर रिट्रेटिंग फ्रॉम द फाइट, आक्रमणकारी माने लड़ाई रु पछक हटुथिले ना। द इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री, भारतीय सैनिक माने विजय हासिल करथिले। तो ये जो ठीक उत्तर होछि हमर ऑप्शन नंबर बी, देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में तीव्र लड़ाई चलथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए सुइटेबल रीजन। डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटी, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू lead his men because he was deeply committed to his duty and wanted to inspire his soldiers to fight with courage and determination. यार उत्तर में लिख परिबा, he was deeply committed to his duty and wanted to inspire his soldiers to fight with courage and determination. से तांकर कर्तव्य प्रति गभीर भाव प्रतिबद्धित थिले एवं तांको सैन्य मान को साहस और दृढ़ संकल्प सहित लड़िया पाई प्रेरणा देउथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ आसेसन एंड रीजन्स गिवन बिलो। उभय दाबी एवं कारण पर ठीक उत्तर बाछिबा। आसेसन पर कौन रही वाक्य, मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फेयरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड इवन दो ही वाज इंजर्ड। रीजन कौन रही, ही बिलीव्ड हिज करेज वाज इम्पोर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स। तो ठीक उत्तर लिखा आम ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर true and R is the correct explanation of A. Next question, fill in the blank with the correct words from those given in bracket. ब्राकेट दिया सठिक शब्द व्यवहार कर वाक्य गुड़िक पूरण करवा।
Major Somnath Sharma was filling magazine and encouraging his men to hold their ground despite of his injuries. तर ठीक उत्तर होची कोन injuries. Next question. Born on 31 January 1923 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. His father, Major General Amarnath Sharma, had served the nation with distinction, and young Somnath was deeply inspired by the valour tales of the Mahabharata imparted to him by his grandfather. Born on 31 January 1903 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 मसीह हिमाचल प्रदेश कांगड़ा स्थित दाढ़ नामक एक सहर जन्मग्रहण करते. से समृद्ध सामरिक परंपरा बा सैन्यबाहिनी सेवा कर ऐतिह्य थिबा परिवार रे जन्मग्रहण करते. हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा had served the nation with distinction, and young Somnath was deeply inspired by the valour tales of the Mahabharata imparted to him by his grandfather. ତାଙ୍କ ପିତା ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅମରନାଥ ଶର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ସହ ଦେଶର ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଳକ ସୋମନାଥ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ମହାଭାରତର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ. ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା. What can be inferred about Somnath Sharma's early influence on his career? ତାହେଲେ ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ରହିଛି ହି ୱାଜ୍ primarily influenced by his father's achievements in the military. His inspiration came slowly from the tales of the Mahabharata. His family and heritage inspired his bravery and sense of duty. He decided to join the military out of necessity rather than passion. ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी हिज फैमिली हेरिटेज इंस्पायर हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू ए वेल्दी फैमिली. ताले विवृत्ति वाक्य गुड़ी ठीक कि भूल आम चिन्हट करवा. सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू ए वेल्दी फैमिली. तो ये वाक्यटी भूल, ये वाक्यटी फॉल्स अच्छी. फॉल्स बोली लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विथ डिस्टिंक्शन टेल अस अबाउट मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा. असाधारण प्रदर्शन सहित देशर सेवा करते. ये वाक्यटी आमको मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा विषय में कौन कहूँ. उत्तर आम लिखा मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा परफॉर्म हिज ड्यूटीज विथ एक्सेप्शनल डेडिकेशन ऑनर एंड एक्सीलेंस. मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा असाधारण निष्ठा सम्मान एवं उत्कर्षतार सहित कर्तव्य पालन करथिले. Replace the underlined phrase with a word from the extract that has a similar meaning. रेखांकित पद्धति को बदलाई समान अर्थ थिबा आ गोटे शब्द आमे व्यवहार कर लिखिबा. My family and I visited a popular hill station and stayed in an old but visually charming house surrounded by trees. मो परिवार एवं मु एक लोकप्रिय हिल स्टेशन परिदर्शन कलु एवं गछ मानक द्वारा घेरा होइतिबा एक पुराना किंतु दृश्यगत भाव में आकर्षणीय घरे रहिलु. भिजुआल चार्मिंग बदल रे आउ गोटे आम
शब्द लिखिबा। आंसर इज पिक्चर्स। उत्तर आम लिखा पिक्चर्स। एबे आम B2 रे प्रश्न उत्तर करवा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ्स लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम। बडगाम युद्ध समय रे मेजर सोमनाथ नेतृत्व कहीं एते गुरुत्वपूर्ण थिला बोली तुम भावुछ। आंसर लिखा आम मेजर सोमनाथ्स लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम बिकॉज he remained calm under pressure, inspired his men to fight bravely despite overwhelming odds and made strategic decisions such as requesting air strikes. बडगाम युद्ध समय मेजर सोमनाथ नेतृत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला कारण से चाप मध्य शांत रही अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति निज सैनिक मान साहस सह लड़ाई प्रेरणा देते एवं विमान आक्रमण पर अनुरोध करने भली रणनीतिक कौशल निष्पत्ति नहीं। His presence and courage motivated his troops to hold their ground, buying valuable time for reinforcements to arrive and save Srinagar. तांकर यह उपस्थिति और साहस तांको सैनिक मानक स्थान छाड़ी न देवा प्रेरित कला जहाद्वारा अतिरिक्त सैन्य आसवा पर्यंत मूल्यवान समय मिलला एवं श्रीनगर रक्षा पाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड्स। व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। मेजर सोमनाथ को शेष शब्द कौन थिला सेडू तांको कर्तव्यबोध विषय रे कौन दर्शाउची। आंसर हम लिखिबा मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड्स वर द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस। मेजर सोमनाथ को शेष शब्द गुड़िक थिला शत्रु आम ठार मात्र 50 गज दूर अच्छी। वी आर हेवीली आउट नंबर्ड। आम संख्यार बहुत कम अच्छु। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर। आम विध्वंसी गोली वर्षा मध्य रहीचु। आई शेल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मु गोटे इंच मध्य पछकू हटिबी नहीं बरं शेष सैनिक एवं शेष गोली पर्यंत लड़िबी। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज अनशेकेबल कमिटमेंट टू हिज मिशन एंड हिज विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री। यही शब्द गुड़िक तांकर अटल प्रतिबद्धता एवं देशर सुरक्षा पाई सबकुछ त्याग करिवार इच्छा को प्रतिफलित करे। They show his deep sense of duty, bravery and leadership. एगुड़िक तांकर गभीर कर्तव्यबोध साहस एवं नेतृत्व को प्रदर्शित करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। What might have been outcome of the battle Badgam if Major Somnath had his company had not held their ground? जदि मेजर सोमनाथ एवं तांको कंपानी सेमानक स्थान में दृढ़ हो रही न थांते तेबे बडगाम युद्धर फलाफल कौन होता। उत्तर आम लिखा आम इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपानी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड द इनफिल्ट्रेटर्स माइट हैव कैप्चर्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट एंड द सराउंडिंग एरियाज। जदि मेजर सोमनाथ एवं तांकर कंपानी निज स्थान में अटल भाव में छिड़ा हो न थांते तेबे अनुप्रवेशकारी माने श्रीनगर विमान बंदर एवं तार आखपाख अंचल को दखल कर नहीं जाइथांते। दिस कुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान इन 1947, चेंजिंग द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सिग्निफिकेंटली। यह फल 1947 मसीह काश्मीर पाकिस्तान हाथ को जाई पारि थांता जहाँ भारत इतिहास गति को बहुत बड़ भाव में बदलाई दे थांता। Why do you think Major Somnath's story continues to inspire soldiers and civilians today? आज मध्य मेजर सोमनाथ कहानी सैनिक एवं साधारण नागरिक कहीं प्रेरणा जगाउछ बोली तुम भावुछ। उत्तर आम लिखा
Major Somnath story inspires people because it embodies courage, patriotism, and selfless sacrifice. मेजर सोमनाथर कहानी लोकों को प्रेरणा देइथाय कारण एथिरे साहस, देशप्रेम एवं निस्वार्थर बलिदान भाव रही. He led from the front despite personal injury and chose to fight against overwhelming odds rather than retreat. से व्यक्तिगत भाव में आघात प्राप्त होइतिले मध्य आगरू नेतृत्व नैतिले एवं पछकु हटिया परिवर्ते अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति मध्य लड़ियाकू बाछिले. Such dedication to the nation sets a powerful example for both soldiers defending the country and civilians striving to uphold values in their daily lives. ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହିପରି ସମର୍ପଣ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ. How can the value demonstrated by Major Somnath Sharma, courage, duty and self-sacrifice be applied in our daily lives? मेजर सोमनाथ शर्मा द्वारा प्रदर्शित मूल्यबोध, साहस, कर्तव्य एवं आत्मबलिदान आम दैनंदिन जीवन में किपरि प्रयोग कर उत्तर में लिखा. दिस वैल्यू कैन गाइड अस टू फेस चैलेंज ब्रेवली, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन एंड पुट द वेलबीइंग ऑफ अदर्स अबव आवर ओन इंटरेस्ट्स. ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସାହସର ସହିତ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାରେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ. Whether it's helping someone in need, standing up for what's right or staying committed to our goals, we can honor his legacy by living with integrity, responsibility and compassion. କାହା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉ, ସଠିକ୍ କଥା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବା ହେଉ, ଆମେ ସତତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କରୁଣା ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୟୁଜିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କଲମ୍ 1. कलम 1 रे रही अभिव्यक्ति गुड़ी आम नहीं वाक्य गुड़ी पूरण करवा. प्रथम रही द डिटेक्टिव मैनेज टू डैश बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट राइड ऑफ इट. उत्तर लिखा आम द डिटेक्टिव मैनेज टू फॉयल द प्लान बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट राइड ऑफ इट. गुप्त प्रमाण खोजी पाइबा द्वारा गुप्तचर जनक दोषी ताको नष्ट करने पूर्व तार योजना को विफल करदे. ताले फॉयल द प्लान अर्थ कौन जानी आम योजना को विफल करवा. नेक्स्ट द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज मीन टू डिलीवर ए ब्लो टू देयर कॉम्पिटिटर सेल्स. कंपनी नुआ विज्ञापन अभियान प्रतियोगी मानक बिक्री रे बड़ आघात देवाई कराइथिला. डिलीवर ए ब्लोर अर्थ हूँ झटका देवा बा बड़ आघात देवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइकर चूज टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट द हेवी रेन रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी. प्रबल वर्षा सत्वे मध्य पदयात्री माने निज स्थिति रे दृढ़ रहिले एवं यात्रा मझिरे फेरिया को मना कले. होल्ड देयर ग्राउंड अर्थ हूँ निज स्थिति रे अटल रहिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Despite being heavily outnumbered, the soldiers vowed to defend their homeland and dash, refusing to surrender to the enemy forces. उत्तर में लिखा. Despite being heavily outnumbered, the soldiers vowed to defend their homeland and fight to the last man, refusing to surrender to the enemy forces. संख्यारे अति
कम होइथिले मध्य सैनिक माने निज मातृभूमि रक्षा करिया पई शपथ नेले एवं शेष सैनिक पर्यंत लढ़िबे बोली प्रतिज्ञा गले। शत्रु सेना आगरे आत्मसमर्पण करने को मना करदेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ए कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar. There are many such collective nouns used in the context of armed forces. Match the collective noun in column 1 to their meaning in column 2. You may refer to dictionary. तो एठारे किछि कलेक्टिव नाउन माने होछि समष्टिवाचक विशेष्य पद अछि। तो सेगुडी को तार अर्थ बुझाउतबा शब्द वाक्य सहित हम ताकू मेल करिबा। से कलेक्टिव नाउन रो अर्थ बुझाउतबा वाक्य रहिछि। तो एगुडी को हमें मेल करिबा। प्रथम शब्द रहिछि कोन रेजिमेंट। रेजिमेंट होछि कोन सेनार गोटे विभाग जेपरि हमर गोरखा रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट रहिछि। स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन होछि कोन वायुसेनार एक विभाग जेपरि किछि विमान एवं सेनार एक दल। नौसेना एवं सेनार मध्य जहाज बा टैंकर दल पई स्क्वाड्रन शब्द व्यवहार करा जाय। फ्लीट। फ्लीट रो अर्थ होछि कोन ये गोटे होछि हमर नौसेनार गोटे विभाग जेपरि गोटे कमांडो तले थिबा अनेक युद्ध जहाजर समूह जेमिति भारतीय नौसेनार पूर्व फ्लीट पश्चिम फ्लीट रहिछि। ठीक सेपरि बटालियन। बटालियनटा होछि कोन सेनार टुकुड़ी। सेनार गोटे विभाग बा सेना टुकुड़ी कहवा जोटा को आम जमी धर 300 रु 1000 सैनिक एक टुकुड़ी अच्छी। ए रेजिमेंट ठार छोट एवं रेजिमेंटर एक अंश होता है। रेजिमेंट। रेजिमेंट हूँ कौन ए परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टाइपिकली कमांडेड बाय ए लेफ्टिनेंट कर्नल एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपनीज। स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन हूँ कौन ए स्मॉल यूनिट टाइपिकली कंप्राइजिंग 12 to 24 एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रूज used in Air Force, Naval or Army aviation services. Fleet. Fleet is a group of ships sailing together engaged in the same activity or under the same ownership. Battalion. Battalion is a large body of troops ready for battle, especially an infantry unit. Next question. Now fill in the blanks suitably with words from कलम 1 इन टेबुल। तो ये शून्य स्थान गुड़ी आम पूरण करवा ऊपर टेबुल शब्द नहीं। प्रथम क्वेश्चन कौन रही द कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द एंटायर डेज ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। उत्तर लिखा आम द कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द एंटायर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, the admiral ordered the entire dash to set sail for battle. The admiral ordered the entire fleet to set sail for battle. Next question, the dash of infantry advanced slowly through the dense forest. The battalion of infantry advanced slowly through the dense forest. Next question, a dash of fighter jets was sent to intercept the enemy planes. A squadron of fighter jets was sent to intercept the enemy planes. तापर क्वेश्चन, read the following words from the text and fill in the blanks with the correct words by taking clue from the meaning given below in the box. पाठर निम्नलिखित शब्द को पढ़ा और दिखाई अर्थर सूचना नहीं सठिक शब्द सहित आम शून्य स्थान पूरण करवा। उत्तर लिखा टू टेक द सीज कंट्रोल नियंत्रण को नेबा एवं दक्षता दखल करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स by taking clues from the meaning given below in the box. पाठ्यरु निम्नलिखित शब्द गुड़ी को पढ़ा और निम्न दिखाई अर्थर सूचना नहीं सठिक शब्द सहित वाक्यर शून्य स्थान गुड़ी को आम पूरण करवा। तो यार उत्तर आम लिखा टू टेक द सीज कंट्रोल डैश। तो टू टेक द सीज कंट्रोल अर्थ हूँ उच्छेद करवा बा क्षमताच्युत करवा। तार लिखा आम
offer through to invade or occupy an area in large numbers माड़ी जीवा बा कब्जा करिवा तो देखिबा हमें ऑफर रन नेक्स्ट क्वेश्चन टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली यार अर्थ होची अभिभूत करिवा ओवरवेल्म नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 अदर verbs that begin with over and frame sentence of your own हेले ओवर रे आरंभ होतबा अति कम रे 5टी अन्य क्रियापदर तालिका करिवा सेगुड़िक वाक्य गठन करिवा तो उत्तर लिख परिवा ओवर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेटर अर्थ होची आवश्यकता ठारू अधिक आकलन करिवा डोंट ओवर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन जस्ट वन डे गोटे दिन रे प्रोजेक्ट शेष करिवार तुम क्षमता को अधिक आकलन कर नाही ओवरलुक रो अर्थ होची अणदेखा करिवा बा दृष्टि छाड़ी देवा सी ओवरलुक ए स्मॉल डिटेल दैट कोड द एंटायर प्लान टू फेल से गोटे छोट विषय को अणदेखा करदेले जहाँ फल संपूर्ण योजना विफल हो गला ओवर रिएक्ट अर्थ होची अतिरिक्त प्रतिक्रिया देवा ही टेंड्स टू ओवर रिएक्ट टू इवन माइनर क्रिटिसिज्म से छोट छोट समालोचन मध्य अतिरिक्त प्रतिक्रिया दे थांती ओवर वर्क माने आवश्यकता ठारू अधिक काम करिवा इफ यू ओवर वर्क योरसेल्फ you will end up feeling exhausted and burned out जदि तुम्हें निजको अधिक काम कराओ तेबे तुम्हें अत्यंत क्लांत एवं थकी जीवो ओवरस्लीप्ड माने बेसी समय सोइबा आई मिस द बस बिकॉज आई ओवरस्लेप्ट दिस मॉर्निंग आज सकाळे बस मिस कली कारण मु अधिक शई पड़ी आज सकाळे मु बेसी समय शईजा कारण बस छाड़देली इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स सी इज यूज्ड फॉर नाउन्स व्हाइल एस इज यूज्ड फॉर verbs नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट निम्नलिखित शब्द जोड़ी गुड़िक विशेष्य सी एवं क्रिया आम एस व्यवहार करवा बर्तमान ब्राकेट दिखाई शब्द गुड़िक सहित शून्य स्थान गुड़िक सठिक भाव पूरण करवा तो यार उत्तर आम कर द टीचर्स एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड सी कंटिन्यूअस टू एडवाइस स्टूडेंट्स ऑन देयर कैरियर चॉइस शिक्षयित्री परामर्श सर्वदा सहायक होता है एवं से छात्र छात्री मानक वृत्ति विकल्प विषय परामर्श दे चलते द म्यूजिशियन बिलीव दैट डेली प्रैक्टिस हेल्प्स a lot so she is always ready to practice her harmonium lessons संगीतकार विश्वास करती जे दैनिक अभ्यास बहुत साहाय्य करे तेणु से सर्वदा तांकर हारमोनियम पाठ अभ्यास करने प्रस्तुत करती द साइंटिस्ट यूज ए स्ट्रेंज device for experiments and plans to devise new method for his analysis वैज्ञानिक जड़े परीक्षण पर एक अजब यंत्र व्यवहार करती एवं तांको विश्लेषण पर नुआ पद्धति उद्भावन करने को योजना करती द विलेज काउंसिल मीट टू डिस्कस इश्यू एंड डिसाइडेड टू काउंसिल द विलेजर्स ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स ग्राम पंचायत समस्या उपरे आलोचना करिया पई बैठक कले एवं गुरुत्वपूर्ण विषय रे ग्रामवासी मानकु परामर्श देबाको निष्पत्ति नेले क्वेश्चन नंबर भी रे प्रश्न उत्तर करिबा एटा कोन होईची सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट अनुसार आम वर्ब रो व्यवहार करिबा जदि सब्जेक्ट सिंगुलर थिबो ताले आम वर्ब मध्ये सिंगुलर व्यवहार करिबा जदि सब्जेक्ट प्लुराल थिबो ताले वर्ब मध्ये आम प्लुराल व्यवहार करिबा प्रश्न को रही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट ताले बंधनी मध्य रही उपयुक्त
भर व्यवहार करी आम वाक्य गुड़ी संपूर्ण करवा। प्रथम प्रश्न कौन रही द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल तो इज रही आर रही तो आम कौन यूज करवा सठिक भर व्यवहार करवा द बुके ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल कहीं बुके हूँ कौन द मेन सब्जेक्ट जोड़ा कौन रही सिंगुलर रही एवं किंतु फ्लावर कथा कहुई तो फ्लावर्स हूँ प्लूराल किंतु आमर बुके हूँ कौन सिंगुलर तेणु एठारे आम इज व्यवहार करवा। तापर प्रश्न नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स डैश अवेयर ऑफ द चेंज इन द शेड्यूल शिक्षक हूँ कि छात्र मैंने हूँ कहीं भी समयसूची परिवर्तन विषय में अवगत नथिले ताले एटा कौन व्यवहार करवा जेहेतु स्टूडेंट्स होती कौन स्टूडेंट्स हूँ प्लूराल तेणु एठारे कौन व्यवहार करिया आमे एठारे वेयर व्यवहार करवा नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वेयर अवेयर ऑफ द चेंज इन द शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट डैश सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम प्रत्येक अंशग्रहणकारी समय निजर प्रोजेक्ट दाखल कर सारी तो लक्ष्य कर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रत्येक कथा कहुई जेहेतु एटारे कौन हो जाऊँ सिंगुलर हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर रोचे तेणु भर मध्य कौन बस सिंगुलर फॉर्म भर आम व्यवहार करवा ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट has submitted their project on time. Next question the data collected by the researchers dash significant trends गवेषक मान द्वारा संग्रह कराई तथ्य गुरुत्वपूर्ण प्रवणता देखा लक्ष्य कर डेटा हूँ कौन डेटा हूँ प्लूराल फॉर्म आ तार सिंगुलर फॉर्म हूँ डेटम किंतु एठारे आमे सो व्यवहार करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द प्लेयर्स डैश इंजर ड्यूरिंग द मैच वन ऑफ द प्लेयर ताले कौन मोर सब्जेक्ट सिंगुलर है तेणु आम एठारे सिंगुलर ही व्यवहार करवा भर तेणु वन ऑफ द प्लेयर्स वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच खेल समय जड़े खिलाड़ी आहत होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइदर द चिल्ड्रेन और देयर गार्डियन डैश टू अटेंड द मीटिंग आइदर द चिल्ड्रेन और देयर गार्डियन हैज टू अटेंड द मीटिंग पिला मानक मध्यरु केही जणे किबा सेमानक अभिभावक बैठक रे जोग देबाकू पड़िबो। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग फ्रॉम द रॉक ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग फ्रॉम द रॉक जेहेतु शूज ए पेयर ऑफ शूज कहुई तेणु गोटे हल जोता मान कौन जो सिंगुलर बुझेब तेणु एठारे आम इज व्यवहार करवा नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स डैश ट्रू नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक से परी द मेंबर ऑफ द जूरी डैश देयर वर्डिक्ट टू द कोर्ट द मेंबर ऑफ द जूरी have delivered their verdict to the court. Mathematics dash an interesting subject for many students. Mathematics is an interesting subject for many students. गणित हूँ अधिकांश पिलांकर आकर्षणीय विषय मैथमेटिक्स इंग्लिश फिजिक्स एगुड़ी हूँ कौन सिंगुलर तेणु एठारे आम इज व्यवहार करवा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। Question you will listen to a talk about the Param Vir Chakra. As you listen, complete the sentence by filling the blanks with one or two exact words or phrase you hear. यार उत्तर आम लिख पारिबा द परम वीर चक्र सिग्निफाइज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव माने परम वीर चक्र सर्वश्रेष्ठ साहसी चक्र को सूचित करे। Next question the Param Vir Chakra is awarded to someone who shows exemplary bravery while fighting with the enemy.
शत्रु सहित लड़ाई करने समय जो व्यक्ति अतुलनीय साहस प्रदर्शन करे तांकु परमवीर चक्र प्रदान करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमवीर चक्र वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए गैलेंटरी मेडल इन 1947 बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेतेबेलर भारत राष्ट्रपति 1947 मसीह यहाँ एक वीरता पदक भाव प्रचलन करथिले। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ द परमवीर चक्र इज इंस्पायर्ड बाय सेज दधीजी हु वाज ए वैदिक ऋषि। परमवीर चक्र डिजाइन वैदिक ऋषि दधीजी द्वारा अनुप्राणित। द स्टेट्स emblem in the center of the Param Chakra is surrounded by the Vajra and lotus flowers. परमवीर चक्र केंद्र थिबा राष्ट्रीय प्रतीक वज्र एवं पद्म फूल द्वारा घेरा होता है। तो पिला माने यह थिला तुमरो मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम विषय समस्त प्रश्नर उत्तर आलोचना। नेक्स्ट वीडियो रे आमे ता परवर्ती अध्याय आलोचना करिबा। आज वीडियो को रखिबा। धन्यवाद।